Good morning, students. Today we will start our new chapter 8, cell, the unit of life. Okay. If you watch your surroundings, your environment on Earth, you can observe there are many things are present. Some are living beings and some are non-living beings. But as we learn in chemistry, everything is made up of very teeny, very small particles. In living beings, they are made up of atom, and the non-living beings, they are made up of small particle atom, and the living beings is made up of a cell. So every organisms on earth is made up of cells which are very minute in size but very much dynamic, physiological and metabolically. ये जो सेल होता है वो लिविंग बींग्स का, उनमें इतना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल चेंजेस होते रहते हैं, ये स्थिर कभी भी नहीं होते. एंड these cells are the fundamental basic unit of life. जैसे कि हमने अभी बताया कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सबसे स्मॉल यूनिट सेल से मिलके बने हैं और हर एक सेल में फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल चेंजेस होते रहते हैं. सो द सेल इज़ द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, बोथ बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन. सो this builds the body structure and carry out all the functions essential for life. लाइफ के लिए essential functions क्या है? Feeding means nutritions, respiration, excretion, development or growth, and division of cells, or you can say reproduction, मूवमेंट्स एक्सेट्रा. ये सब एक सेल में भी हो सकता है. लाइक सम एनिमल्स और सम ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेलर, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. सो हियर a single cell perform all the activities like digestion, excretion, locomotion, reproduction, etc. However, in multicellular organisms, there is a physical division of labor among cells. मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड हुआ और अलग नहीं हुआ, देन दे कैन मेक टिश्यूज फॉर्म, एंड व्हेन इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज फॉर्म, द टिश्यूज कन्वर्ट इनटू organs for work and organ system, and then make finally organisms. So cells are organized into tissues, organs and organ system in multicellular organisms. Okay, like this. And ultimately the organism's body is formed. So what is the definition of cell? A cell is structural and functional unit of life or living beings, and it is a basic unit of life. And a cell is a small mass of living matter like प्रोटोप्लाज्म. इसमें लिक्विड जो भरा होता है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, and many cell organelles are found in it which is work from various living functions. A cell is the smallest living unit which can survive independently, like amoeba, paramecium, euglena, all protozoans. Okay, and a cell is the piece of nucleated cytoplasm surrounded by a cell membrane which may exist singly or in a groups. And when we defined the cell as the unit of biological activity surrounded by permeable membrane
and capable of cell reproduction in a medium free of other living system. ओके सेल जो है एक यूनिट होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का यूनिट होता है जो परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, एंड ये सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी मीडियम में कैपेबल होता है, और जो लिविंग सिस्टम है वो फ्री रूप से ये कर सकता है. However, not a single definition of cell is perfect, the accepted by the scientific community. And Whitaker virus as a living cell. Viruses are living entiers, as they can replicate and parasites many plants and animals, causing serious disease in them. वायरस को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का माना जाता है, बिकॉज दे आर कॉसेस ऑफ मेनी सीरियस डिसीज इन ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर एक्सेप्शंस टू अबव डेफिनेशन ऑफ सेल. जो हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा उसका एक्सेप्शन है. इसमें किसी प्रकार का बाउंड्री वॉल मीन्स सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होता, absent होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज आल्सो absent, and cell organelles are also absent in there, but genetic material like RNA and DNA are present here, and like other membrane bound organelles are also not found in virus, and metabolic activities within a virus do never take place. So this is the reason why a virus is called viral particles, not a viral cell. Okay, and the cell is a basic unit of life. All the organisms of the earth are made up of either one or more than one cells, as we read in previously. हमने जैसे कि पहले कहा कि सभी ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलर होते हैं तो वन सेल से बने होते हैं, या फिर मल्टी सेलर होते तो बहुत सारे सेल से इनका बॉडी जो है वो बना होता है. सो इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑरिजन्स एंड फंक्शंस टू मेक अ टिश्यूज. इनमें जो सेल्स होते हैं वो इनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर होता है, एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शंस में लगभग सेम होते हैं, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. और ये जो भी फंक्शन लेबर कैटेगरी के होते हैं इनका टिश्यूज, देन लेबर कैटेगरी मीन्स लेबर डिवीजन ऑफ लेबर इनके सेल्स में टिश्यूज में पाया जाता है. लाइक आवर आइज are functioning to watching things, and digestive system is functioning to digest the food, है ना. So many types of tissues are found in multicellular organisms according to their work. So according to their function, tissues become morphological different, and this is known as cellular differentiation. In multicellular organisms, different functions are performed by different tissues. ठीक है, and this is known as division of labor. Okay, while in a multicellular organisms, all the vital functions are performed by a single cell, hence division of labor is absent in them. While in a unicellular, okay, this unicellular organisms like amoeba, protozoa, all protozoans, like amoeba, euglena and paramecium, यहाँ पर लेबर डिवीजन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर टिश्यू सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. सो एक सिंगल सेल ही सारे वर्क को करता है. A group of tissues further organized to form organs like leaf of the plant, that is made up of the chlorophyllous tissues, and
Likewise, stomach, ovary, kidney, and brain are different organs of the animals. A group of organs which work in coordination and perform major functions of the body form organ systems. For example, digestive system consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, liver, and pancreas. ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलके बना होता है। ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं और ये टिश्यूज सेल से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस तक डिफरेंट पार्ट उसके होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। लाइक माउथ में फूड को चीव किया जाता है एंड बकल कैविटी में सलाइवा इसमें मिक्स किया जाता है एंड फेरिंग्स एंड इसोफेगस स्टमक इनमें फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड इंटेस्टाइन में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। लीवर एंड पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। देन एक कंप्लीट जो है वो ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें एक वर्क फूड अचीव करना एंड डाइजेस्ट करना ये कंप्लीट होता है। तो इस टाइप से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लेबर का डिवीज़न हो गया है ना। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ही फूड को अचीव करेगा एंड डाइजेस्ट करेगा, नॉट अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, इसको सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे बॉडी में, है ना। वास्कुलर सिस्टम जैसे लाइक प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम एंड एनिमल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, सर्कुलेशन का काम करेंगे बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इससे बने होंगे और ये वेस्टेज जो हमारे बॉडी में होता है उसका एक्सक्रीशन करेंगे। सो ऑल दीज ऑर्गन्स परफॉर्म मेजर फंक्शंस इन द बॉडी। वेरियस ऑर्गन सिस्टम फर्दर वर्क इन अ coordination to form a organisms. Okay. Then sorry, let's we learn the cell theory. The concept that cell is the basic unit of life is known as cell theory or cell doctrine. The first attempt to present a theory recording cellular organization of living beings was made by a French scientist H.I. Dutrochet, 1924. In this context, he postulated two views. Every organism is composed of cell, and cell is the basic unit of all organisms. And the actual cell theory was proposed by M.J. Slidens in 1804 to 1881. अ जर्मन बॉटनिस्ट, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल सेल थ्योरी को प्रपोज किया। एंड ही फाउंड दैट ऑल प्लांट टिश्यूज वर मेड ऑफ वन और द अदर काइंड ऑफ सेल्स। सो देयरफॉर स्लीडन in 1938 concluded that cells constitute the ultimate unit of plant tissues. In other words, cells are organisms and entire plants and animals are aggregation of these organisms arranged according to definite law. And what is the modern cell theory or cell principle? The cell principles in the modification of modern form of the cell theory, it is also known to be as cell doctrine or cell principles. The cell theory stand
today as cell principle state that all organisms are composed of cells and their product. ओके सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल या और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसी से बने होते हैं. इधर दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर. न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. न्यू सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो पहले से जो सेल हैं है ना, रिप्रोडक्शन और डिवीजन के थ्रू जो शुरू से सेल बने हैं उसी के डिवीजन के फलस्वरूप बनेंगे, चाहे उसमें भले चेंज हो जाए. लाइक अमीबा का जो सेल डिवीजन होगा उससे अमीबा बनेगा, नया अमीबा, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है, बट ज़्यादातर तो सिमिलरिटीज उसमें अमीबा के ही सारे करेक्टर्स होंगे. एंड ऑल सेल्स आर बेसिकली लाइक इन केमिकली composition and metabolic activities, and all the activities of an organisms as a whole is the outcome of the activities and interaction of the constitution the cell of that organisms, right. इस सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एंड हैविंग अ न्यूक्लियस बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन विथ और विथआउट अ सेल वॉल. जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन देयर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. इफ इट इज यूकैरियोटिक सेल there are nucleus is bounded on nuclear membrane, but in a prokaryotic cell there are nuclear substance are not bounded in a nuclear membrane. And if it is unicellular multicellular eukaryotic cells, they are bounded by cell wall or not. In plant cell wall is found, and in animals cell wall is not found. Cells are the hereditary unit of life as it contain hereditary substance in its nucleus. जैसे कि मैंने बताया भी न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है वो हेरिडिटरी सब्सटेंस होते हैं, जिससे एक सेल का कैरेक्टर जो है वो न्यू बॉर्न सेल्स में या बेबी सेल में या डॉटर सेल्स में या ऑफस्प्रिंग सेल्स में फॉलो अप होता है. एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड multiplication of its cells. Genetic information are stored and expressed inside the cell in nucleus, and basically all the cells are totipotent. टोटिपोटेंस मीन्स एक सेल अपने ही जैसे सेल को डिवीजन के द्वारा बना सकता है, या सेल का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो वो फिर से बन सकता है. And each cell maintain in its individuality. It has a specific internal environment and homeostasis. सभी सेल का खुद का इंडिविजुअलिटी होता है, उसका खुद का स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और उसका फंक्शन होता है. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का हम पढ़ेंगे. देन तब तक के लिए goodbye and take care.